हमारी छोटी छोटी वेबिनार रखने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आज का युग बड़ा फास्ट हो चुका है और हम छोटे 1 घंटे की वेबिनार में 4-5 वक्ताओं के 6 वक्ताओं के यदि आशीर्वाद ले लेते हैं तो ये निश्चय एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये 10 मिनट की रील का जमाना है और रील से भी शॉर्ट पे आता जा रहा है आदमी। भगवान मालिक है कितना शॉर्ट आएगा। हो सकता है फिर हम फोटो पे चले आए कि फोटो देख के पूरी पिक्चर का मूवमेंट अपने आंखों में क्रिएटिव विजुलाइज कर लें। तो थैंक यू वेरी मच। I would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Webinar Series at the milestone of 2002. Today's topic is very unique, AYUSH Smart Steps for Globalization. And really, we are grateful to you all for your mentorship, active participation, and guidance. Thank you, and thank you very much. Without you, this journey was absolutely impossible. And due to your gracious presence, now this journey has been converted into infinite. Thank you very much. Without wasting much time, I would like to invite Yagnotri sir for welcome address. Thank you, Professor Pankshamaji. It's really a great pleasure that we are again having a great galaxy of our guest speakers for 2002 number of webinar on our IRES Ayush Shankla Antarashtriya series webinar. So I welcome Dr. Subhash Shetty ji, especially he is joining from KLE, definitely a young chap as Professor Pankshamaji told, and having a lot of future expectations regarding the upliftment and the expansion of Ayurveda. Of course, the topic itself is the of same nature globalization of our Ayush. And our next guest speaker is our Sophie sir, our Sanatan Makun sir. These are all waiting for, I think, more than half an hour. So without wasting any time, all the guest speakers who have joined our this webinar will be here, and I would be blessed enough by their presentation, by their good wishes, and by their blessings. So without wasting any time, I would again I'm extending my welcome to all these big guys and would like to hear from them. So for that, Professor, over to Professor Pawan Sharma. Namaskar. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Dr. Suhas Kumar Sethi, young, dynamic, energetic, and really learned person who is really capable to hold the directorship of KLE type institute, best institute. Thank you, Dr. Suhas, for your active cooperation. Now that cooperation is after directorship, that is less. That is a different issue. But again, I would like to send you every month the program, and please introduce new talents and expert seniors from all over the world. Thank you, Suhasji. Welcome. You are honest enough to say the cooperation. Very good evening to all of you. At the outset, let me congratulate Pawan Sharma sir and this entire team for a great achievement. The International Ayush Samriddhi seminar has crossed more than 2,000. Just 2 hours back, it was 2,000 and another. He has already added 2 more in next 2 hours. And that's the type of the commitment that the Pawan Sharma sir has been doing. I think the speed really. Of Pawan Sharma, speed. Yes. No, already 1 hour back we had 2,000 and now already we have moved to 2002. And that's a type of, the commitment and really, it's not so easy to have that perseverance and continuity it has taken like a yajna. And it's always a great honor and pleasure to join this great movement. It is not just an event. I feel this is a big moment of our life to be a part of this particular webinar series. And aptly, the topic was the smart steps for globalizations. Various seniors, gurus,
advisors, mentors have really put their views, and I would just try to put few of my small efforts in giving my small opinions. See, when you talk about globalizations, as most of the people have said, it is very important that we try to really put a very strong footage in our country itself and in the neighboring countries. And that's the reason why there has been an immense, enormous improvement in the type of the care that we are able to get in Ayurveda, thanks to the Ministry of Ayush that like we have a Rajashraya now, with so much of support being gathered across the country, so much of real weightage and the support being rendered by various government policies. That's the reason I two very important policies that is there is the Heal in India and Heal by India, through where we can invite everybody across the globe to India to serve with the best of the principles and practices of Ayurveda, and wherever necessary, Heal by India is where our Vaidyas or the doctors are going to different countries to treat different people. For that to happen, no, probably we should be really prepared for this global scenario. And as rightly mentioned, that this is a smart step where S stands for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, and T for time tested. So our steps should be very, very critical, very, very specific. We always should also be able to provide that in a measurable quantity, and at the same time we should see that we should have a very clear short-term goals, mid-term goals, and long-term goals, like what we're going to achieve in next 2 years, what we're going to achieve in next 5 years, and what we should be able to achieve in next 10 years. And especially when India will be celebrating 100 years of independence, the next Viksit Bharat in 2047, what should be our role? So that is why if we have a very clear short-term, mid-term, and the long-term goals, I think we definitely will be able to achieve in our goal of having be able to make this healthcare system the world healthcare system. For that to happen, probably there should be a transformation, there should be a change in terms of our education, in terms of healthcare services, and very importantly in terms of the research. So always Ayurveda should never lose its tradition. So that is why probably we at our institution have the three basic mantra of tradition, technology, and innovations. Without losing the tradition, we would like to implement or probably try to connect the technology for the innovations. So we are at the age when we are talking a lot of artificial intelligence, machine learning. But one thing that probably I always realize that AI is not just artificial intelligence, it is Ayurveda intelligence, it is Acharya intelligence, which will never, no, Yukti can never replace any of the technology in Ayurveda. There should always be that Bishak's touch or the Vaidya's involvement, which can never replace any technology in Ayurveda. That's why having the commitment and having that approach towards making ourselves very competent Vaidyas, very confident Vaidyas is the role of all the teachers who are able to produce the next generation Ayurveda graduates. So that is why a lot of transformation has been happening in the area of education, definitely with the changes that's happening with NCISM, new curriculum, and meeting to the national education policies, the international standards. Definitely, there are a lot of transformation happening, and that is why we always can be ready for the globe. Very important thing when we're talking about like the most important thing is to make ourselves special, to make our stand in the society. We should become very, very special, and that is why in Ayurveda, in Hindi we say as we should become khas, KAS, where K stands for knowledge.
A stands for attitude, and S stands for skills. So these are the three very important things that as Vaidyas we should be able to imbibe. Identify the area of specialization where you would like to work, like in area of diabetes, in terms of hypertension, like low backache, eye disorders. No, we should be able to understand. Like basically, my specialty is Manas Roga, and that is why I try to see that I am able to establish my own practice of Manas Roga. Try to treat patients across the globe who are coming to me from different parts of the world in search of the treatment for the various psychiatric disorders. So that is how we should be able to have a great impact on the society. At the same time, try to imbibe all the possible ways of knowing. Suppose you are talking about globalization, try to understand the legality, the regulation part, the licensing part, how it is acceptable in those countries, and how we should be able to know our what is certification required, what is the insurance that is available, who are your sponsorships. All these things are to be known. What is their culture? What is their socioeconomic status? What is their lifestyle, diet? No, all these are very, very important when we're talking to reach globalizations. At the same time, giving the best of the healthcare is very, very important. And most importantly, to ensure that we are able to give or generate good evidences. No, Ayurveda is not just the evidence-based medicine. It is more of an experience-based medicine. I do but try to document whatever you're able to treat them, give them a, a good protocols, a good SOPs to be designed, and if we were able to publish all this, because I think just by publishing few of the articles, especially on schizophrenia, on depression, on alcohol abuses, I am able to get plenty of cases across the globe. No? And that's the reason why when we are able to do this in a very big way, few key series, few controlled trials, good amount of publications, definitely the world will definitely turn towards us. And this is a time probably we should be ready for the challenge. At the same time, no, not just wait for the time to really pass away. We should be in tune with the time, and if we all join together to have like Vasudeva Kutumbakam, join hands together as a team of Ayurveda, definitely will definitely have a great impact not only in India but across the globe. So the time is where we definitely need to gear up and see that we are also trying to have the plausible interdisciplinary research to try to talk with the people across the transdisciplinary, maybe the basic science like the biochemistry, microbiology, fundamental chemistry. So all these are the time when we should have the cross talk across the different domains, be ready to accept the challenge of the interdisciplinary research. And once probably we do that, definitely Ayurveda will be the mainline treatment when India will be celebrating its independence. So I would like to really congratulate Pawan Sharma sir, and truly supported by like his brother Agnihotri sir, who has really supported. Of course, I really apologize for not being able to contribute because of my personal commitments, but I'll ensure wherever and whenever possible, हम्म, I'll be very happy to support with all my then Manse, definitely I'll be definitely will be supporting this very, very noble cause of Pawan Sharma sir. It has been five great years that I've enjoyed the company of sir and looking forward for his constant blessings and support. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सुहास जी। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा, थोड़ा हर महीने में एक दिन तकलीफ दूंगा, जरूर आप मेरे को गाइडेंस दीजिएगा। हम चाहते हैं, फिर संकल्प दोहरा रहा हूं सबके सामने, इस साल, पिछले साल 830 की थी, इस साल 1000 वेबिनार का संकल्प है, और 150 कंट्री में मैं जाऊंगा, आप लोगों के द्वारा ही जाऊंगा, ड्यू टू यू, फॉर यू, बाय यू।
मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। शेखर जी मेरे साथ बैठे हैं। मैं आशा करूंगा 10-20 कंट्री आप भी देंगे। अवतार जी भी मेरे सर बैठे हैं। तो बस मतलब सब लोग, दो दो लोगों को भी हमें जुड़ाएं तो आयुर्वेद का कम से कम वहाँ प्रचार होगा। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है उनसे एक फूटी कौड़ी कमाना, हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारे आयुर्वेद को वहां तक पहुंचाना जरूर उद्देश्य। उसमें प्लीज सफल कीजिए। जो जो आप कर सकते हैं, जैसी आहुति दी सकते हैं, घी से दें, तेल से दें, डालडा से दें, सब चलेगी। अपने यज्ञ में सब चलेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूँ, बीच में थोड़ा लाइटर नोट पे होना चाहिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सुहास जी का, और डॉक्टर शेखर अन्नम बोटला को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों पे। माय फ्रेंड, माय ब्रदर, डॉक्टर शेखर अन्नम बोटला। प्लीज अनम्यूट। प्लीज Sir, अनम्यूट। Shekhar sir, kindly unmute. Good. I'm okay now. Good. Yes, now you're audible. Respected my friends and colleagues and all the people who are dignitaries are here. And today is a celebration of the 2000 webinars are conducted continuously without failure by Professor Dr. Pawan Sharmaji for his own initiation. This is the all due to COVID. COVID, we have taken advantage as a blessing, and we are not fearful or worried about anything, that we are continued our journey of Ayurveda, because in the ancient time we have an rogas, upasargika rogas, and there are the rogas which are coming from the sankramika rogas, so particularly plague and all the different types of diseases are coming in the Sushruta period of time also. But still, they continued working with Sushruta, Charaka, Vagbhata, and all the people. They continued their work. Vaidyas are continuing, the Jadibuti are continuing, everything is continuing. So our journey is that we have to be passionate. That's the thing we have to instill. We don't need to teach Ayurveda for anybody. Ayurveda is available everywhere. Ayurveda, nature teaches us. If you go in front of the apple tree, what is the smell of the apple tree? It will tell us, because we have a senses are there. All the senses are there in our physiology. We don't need to teach Ayurveda for the students. What we needed to do, we need to instill the passion, love towards Ayurveda and humanity. All these things, they have to be passionate to help the people, as many as people they can do it. Then it will become, so Ayurveda is progresses. The globalization, as when we were studying Ayurveda in 1982, Ayurvedic studies in India, and almost 40 years back, we were thinking about that, how to bring Ayurveda to the abroad. Now Avatarji is here. Since long time back, he studied in India. Now he settled there in UK, and all over the various countries, people are participating in this various activities there, and we are able to teach, educate the people, and at the same time we treat the people, we help them to various conditions, very challenging cases also. Some of the things are coming, even the congenital diseases. It's not only cancer, something like that, it's the congenital diseases, the deformities are happening there. Those conditions also we are taking care about them in a simplified way, and bringing them. So Ayurveda, a lot of people think about that. There is one saying is that we don't know competent, like the nachana anganavake means, so you don't know how to dance the dance, but you are always saying that the platform is bad, or the glory, the Ayurveda is not recognized in UK or USA or Japan, Australia, like that. Don't worry about that part. First, what you needed to think about that, whether you are competent to serve for the people or not. Your honesty, integrity, and everything is important. Then automatically these doors will open. Sir, I need to have a license, then only I will practice Ayurveda. In India, we have licenses are there. Why you are not practicing Ayurveda? In India, full-fledged form of licenses are there in India. Why can't you cure all the people? 1.5 billion population is there in India. सबको निरोग बनाओ, नहीं बना सकते हैं. No, I wanted to come to UK only. I wanted to practice in UK. Or in USA, I wanted to practice. First, start doing of the things. Every BAMS graduate, at least
1 lakh patients. That is their goal is that 1 lakh patients they can see. 1 lakh, 100,000 people. That is the goal, is that once they are there, they will get a confidence. They will get a confidence. That is the thing we need to create it, like they're passionate about that, how you are able to help them people and to work with them and to continue working in this way, and globalization will take place. Another thing is that I strongly recommend, even though some of the government officials are here, and I strongly recommend Government of India, Ayush Ministry has to take a responsibility to take, like Pawan Sharma ji, who is working hard, even though he is not in the government sector, private sector, he is working in the private sector. We can take him as a professor, as an Ayush chair. Ayush chair, any country, he can send it him to other countries, like the similar type of people that who are healthy. First, what they needed to do, qualifications are important. And second thing is that healthy are not important. And memory and everything is there. They are able to having stability and everything is there, medical fitness. And at the same time, they are able to travel, relocate to the different countries like that. Take all the missionaries, like 130 countries are there. And every country, UK, USA, we have 5 consulate generals are there. So in every consulate general, one Irish advisor should sit from the India. And that then only it will Ayurveda will be globalized. Who is going to come? Who is the senior most practitioners? Either a practitioner, researcher, or academician. Anybody who is there, are deans or the university deans and other people are there, retired people are there. They are having no obligation. They are ready to work and passionately working there. You have to send them to the different countries where they can rotate it. Not only one country, they have to stay there. Rotation means every 2 years they rotate to the different countries, like an IFS officers, Indian Foreign Service people, how they are doing. All the consulate generals, what they are doing, they work from Burma, Burma to Sri Lanka, Sri Lanka to Afghanistan, Afghanistan to USA, USA to UK, everywhere they travel. Same way, how we have to do it, we have to recruit the Ayush chairs, either private sector or government sector. You wanted to put an examination for them, conduct examination, take at least minimum 5,000 Ayush directors, Ayush chairs should be there in all over the world, different countries. Then what we do, they are having remuneration is paid from the government of India, Ayush Ministry, and they have to reconnect with all the Ayurveda doctors, Ayurveda practitioners, locally practicing like Avatar Singh there. They can invite him to come to the consulate general, Indian consulate general. Sir, what is the things you are facing? What are the problems you are facing? How the you are procuring the herbs? What type of diseases you are doing? How can we promote it? Because we are staying here, we are living here in this country, we know the in and out of the country, like that, what is going on. That is the thing. I wish that is the only thing way is the globalization take place. By conducting the conferences, no use. Conducting conference, no use, because that is the only mela we are doing, only 3 days mela. And it's not sufficient. That is awareness we are bringing. But the real practical thing, what I wanted to address that way, Ayush Ministry, having a funds are there, the international funds are there, they can afford it, they can select the people, not only government officials, not only influenced people. The other thing is the important thing is that in India, they try to take the only influenced people. Oh, I know this guy and I will take him. Instead of that, conduct a competitive examination for them, physical fitness examination, and they are ready to commit for going to the different country. They can migrate it. Sir, my mummy bimar hai, oh hai, ye hai. Oh, sir, okay. Then they can stay in India. They can stay there in India. Those who are committed, like Pawan Sharma ji and Agnihotra ji, these are the people are open. They are ready to go. You can send them any country and they will stay there and they connect with the local people, they meet with the people, government officials, government to government talks will happen. Then only globalization takes place. Thank you, one and all. I had to go back to my patients to see them. Thank you giving the opportunity for that. This is the one message I wanted to give it to the Ayush Samriddhi, which is a 2000 webinars conducted successfully, and it will continue. I told them that Pawan Sharma ji is my big brother, and I ask him to continue working there. This is the thing is happening there. It's definitely it happens various countries, because at least we are in these countries like English speaking countries. How ये many केवल 1 मिनट होल्ड कीजिए.
Very minimal number of English-speaking countries are there. Then we need to have the people who are Japanese, they can't speak in proper English, and Russians and Spanish people, there is difficulty for language problem. Language is the barrier for them. Okay, we have limited countries, Australia, New Zealand, UK, and USA, and Canada, and these are the specific countries, only 15 countries, 20 countries, they can properly speak their mother tongue language, English. Whereas Indians, of course, they can fit anywhere. Indians can fit anywhere. Punjabi, Gujarati, and Tamil, anybody, because we are trained such a way that we are jack of, Great. can fit anywhere. Any country you take them there, and we teach them local, our language. Even Hindi we teach them. So this is the way our culture is, that way that we are. That is the thing. Our beauty of the country is that even though we are all having so many languages we speak. Small country in India is a small country. 16 languages we speak. 16 languages we speak. Different official languages we talk, but at the same time we are all connected to each other. From heart to heart, they are connected to each other. We understand each other. Even Tamil guy talking to Avatar Singh ji, he can understand what he is expressing like that. Even though complete just he cannot understand completely, that at least he is speaking. Telugu guy is speaking, he can understand. Punjabi he is speaking, he can understand. That's the way it is, goes like that. We are trying to understand these things. Same way, don't think about that. Everybody think about that. Everybody has to, from India, we have vacate the country and come to America or UK and these things. What about India? India, 1.5 billion population is there. People are having, we need to showcase them. How many people are smokers are there? Alcohol centers are there. We need to ban the alcohol centers. And we need to have ban the smoking. These are all the different things that can be done. More healthy problems are there. You need to identify them, how to maintain these things. We are making the healthier. At the same time, we are promoting the bad things also. That is the thing, is very important like that. If how many Talisal Churnam tablets you give, Abhragabhasma, you give it to them. If the guy is smoking, you cannot cure him. So this is the thing, is very important like that. We need to have preventive care is important. Ayush ministry take the preventive care important from the perspective of the swasthastha swastha rakshanam. That is a principle, is we have to maintain it. Ayush ministry has to focus that way. Pamphlet has to be printed. And what are the hazards of these things, are there everything, and all the Ayurvedic doctors should become soldiers of Ayurveda. Soldiers of Ayurveda to work in that, in the villages and everything, smoking shops and everything, alcohol can be taken as a medicine. Now it's becoming and more the cannabis and everything, there are so many side effects are opening up. More and more people are getting side effects because misuse, that is also creating the problem. Thank you one and all for giving this opportunity. I'll talk to you again. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Shekharji, you are really doing wonderful in USA. May God bless you. And may God bless you with prosperity, health, success, everything. God bless you. Thank you. So now I would like, मैं अब डॉक्टर यूनिस मुंशी, क्योंकि हमारी यूनानी बाकी है अभी तक, योग और यूनानी, तो मैं मतलब यूनानी के कर्णधार डायरेक्टर, हैदराबाद के यूनानी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, आदरणीय डॉक्टर यूनुस मुंशी जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। तत्पश्चात हमारे साथ गुलामुद्दीन सोफी जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। डॉक्टर यूनुस मुंशी जी, वेलकम वेलकम। नमस्कार सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन जॉइनिंग। आज तो दर्शन दीजिए, आपका ही जलसा है 2000 का। अग्निहोत्री जी का मैं आदर करता हूं, आपका भी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली जब से मैं हैदराबाद ज्वाइन किया हूं, मेरा इतना और बिजी शेड्यूल हो गया है दैट आई एम अनएबल टू पार्टिसिपेट इन योर सो मच इंटेलेक्चुअल वेबिनार्स, कि जहां से सीखने को मुझे बहुत मिला। जब मैं कलकत्ता में था तो मैं हमेशा ज्वाइन करता था, लेकिन हैदराबाद आने के बाद ज़रा थोड़ा सा मसला ज़्यादा टेढ़ा हो गया। रिगार्डिंग जो अभी शेखर जी ने भी कहा कि ग्लोबली हम कैसे प्रिवेल कर सकते हैं, शायद इनको जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं हमारे आयुष मंत्रालय के, उनको पढ़ना पड़ेगा इनको, कि उसमें बहुत सारे
स्कीम्स हैं जो इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंडर आती हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ से जाए, यू कैन कम टू द गवर्नमेंट एंड यू कैन टेक द स्कीम्स। इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंडर आपका सीओई भी आता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आता है, वर्कशॉप्स भी आते हैं, क्लिनिक्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बट देयर शुड बी सम ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल जो आपकी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से आए, देन वी गो अहेड। जैसे अभी हमारा ईरान और मलेशिया में हुआ जो इवेंट्स हुए, इवन अबू धाबी में भी हुआ, दुबई में भी हुआ था। तो दुबई में चूंकि फरवरी में गया था मैं, वहाँ पे मैं इनवाइट ही था, तो उनको भी मैंने यही कहा दैट यू गो अहेड, यू ऑलवेज ट्राई टू विजिट द आयुष वेबसाइट एंड गो फॉर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। इवन वी हैव द स्कॉलरशिप्स फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स टू गो फॉर शॉर्ट कोर्सेज इन इंडिया, to learn Indian system of medicine, to learn the traditional system of medicine. जहां तक ग्लोबल लेवल पे जाने की बात है, जैसे हम सारी कंट्रीज में देखें कि आयुष कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। रिकॉग्निशन का एक मात्र ये है, जैसे चाइना ने किया है ग्लोबल लेवल में, उन्होंने उन्हीं की कंट्री में उन्हीं के लॉज को अवॉइड करके, उन्हीं की लेबोरेटरीज हायर करके, उन्हीं के साइंटिस्ट को लेके दे मैनेज टू एंटर द कंट्रीज। इसी तरह से हमें भी लेना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए। मैं पवन जी से एक आदरण गुजारिश करता हूं कि ये जो भी आपके वेबिनार हैं उसके मिनट्स जब बनेंगे तो वो मिनट्स हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत सारे कंट्रीज के आते हैं, बहुत सारे थॉट्स लेके आते हैं, वो थॉट्स को कंपाइल करके आप मिनिस्ट्री को पेश कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास जो जो लोगों के विचार आए हैं, और इन विचारों का जो फिर जो उनके क्वेश्चंस है, उनकी क्वेरीज जो है, उनका रिप्लाई क्या है, वो खुद ही कहते हैं। ये क्वेरीज भी उठाते हैं और खुद ही फिर उसका जवाब भी देते हैं। वो पूरा कंपाइल करके वी कैन गो टू द गवर्नमेंट दैट हाउ वी कैन फ्रेम आउट द पॉलिसी so that we can move ahead globally, since we have been recognized as a global leader in आयुष। जो हमारा जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर खुलने का मतलब ही ये है कि दैट वी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज लीडर इन द आयुष। लेकिन बाकी कंट्रीज के, हर एक कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। जैसे गल्फ में पॉलिसी है, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन मानते हैं, लेकिन आयुष को कैसे हम आयुष मेडिसिन कैसे वहाँ ले सकते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज होती है। तो इसी तरह से यूके, यूएसए, इनकी भी अपनी पॉलिसीज है। इन सम कंट्रीज देर आर माफियाज, वो जो अपने जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उनके माफियाज चलते हैं, वो अपना मार्केट कभी सफर नहीं होने देंगे। बट एट द सेम टाइम दे कैन अलाउ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, उनके अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन चलते रहते हैं। तो उसी के थ्रू अगर हम जाएंगे, वहीं की लेबोरेटरी ले लेंगे, उन्हीं के लॉज के अंडर, उन्हीं के बायलॉज के अंडर हम काम करें, उसी के जो एफडीए के नॉर्म्स हैं उनके अपने यूएसए के, अगर वो नॉर्म्स लेके हम चलें, एक्सपेरिमेंटेशन करें, उनकी जो नॉर्म्स में है कि किस तरीके से आप प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, सो दैट दैट रिसर्च इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ दैट कंट्री। या आप जो अथॉरिटीज हैं इसके, हेल्थ हेल्थ अथॉरिटीज, सिटिल और मेडिसिन जो भी जाता है वो फूड सप्लीमेंट जाता है। वाइल एज वी कैन गो एज अ मेडिसिन बाय अडॉप्टिंग देयर पॉलिसीज। वो हमारी पॉलिसीज को लेकर नहीं चलेंगे, दे विल नेवर एक्सेप्ट आवर पॉलिसीज। when we don't accept any country's policy, why should they accept ours? But through their policies, जो उनकी पॉलिसीज है उसको अडॉप्ट करके वी कैन ओपन द लेबोरेटरीज ओवर देयर, और वी कैन हायर द लेबोरेटरीज। यूरोपियन कंट्रीज को सिंपली दे नीड द मनी, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, एंड वी हैव द मनी। आयुष में अभी 2014 के बाद जो हमारा एक ग्रोथ, नई दिशा मिली है, वो दिशा को लेके इसमें बजट का इंक्रीज हुआ, इसमें मैन पावर का इंक्रीज हुआ, इसमें मिनिस्ट्री अलग हो गई, और इवन ऑनरेबल पीएम इज टोटली आउटराइटली सपोर्टिंग अस डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस अपोजिशन फ्रॉम द एलोपैथिक साइड। कभी कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ आता है, कभी हाई कोर्ट्स में आता है, बट डिस्पाइट दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज टोटली इन सपोर्ट ऑफ आयुष। तो वो सपोर्ट को इस वक्त अगर हम फायदा नहीं उठा सके तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है, जो इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंतर्गत हमारे स्कीम्स हैं, जो इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंदर हमारा जो कोलैबोरेशन चलता है दूसरों के साथ, जो इन्होंने चेयर का कहा
यस देयर आर चेयर्स, चेयर तो हमारी भी यूनानी की भी चली, साउथ अफ्रीका में चल के फिर वो वहीं से खत्म हो गई। एक चेयर एस्टैब्लिश हो गई, उसमें चेयरपर्सन अपॉइंट हो गया, वो चेयरपर्सन हटते ही वो चेयर ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, वी शुड कंटिन्यू दैट। तो वो कंटिन्यू करने के लिए इसमें यही है जो हमारे अभी जो दे रहे थे कि दैट वी हैव टू कनेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन। जब तक हम लोकल पॉपुलेशन के साथ, जो लोकल हमारे वहाँ पे इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, वो हमें बता देंगे कि यहाँ पे हमारी डिफिकल्टीज क्या है, किस तरह से उनका समाधान किया जाएगा। ओनली बाय दैट वे वी कैन एंटर इन द कंट्री। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे लॉज बहुत नरम है। जरूरी नहीं है कि दैट वी विल गो फॉर यूएसए एंड इंग्लैंड अदर अदर सुपर पावर्स। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लोअर, जो जो बिल्कुल स्मॉलर यूरोपियन कंट्रीज है, वहां से स्टार्ट करके एक यूरोपियन कंट्री ने आपको अडॉप्ट किया तो बाकी भी अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए यही है कि दैट वी हैव टू अडॉप्ट देयर लॉज। इसमें ये नहीं हमारे लॉज नहीं चलेंगे हमारे, क्योंकि हमारी पॉलिसीज बहुत नरम है। हमारे पास अगर हम कितने भी पेशेंट ट्रीट करें और पेशेंट को कुछ भी हो जाएगा, नेसेसरी नहीं है कि वो हमारे ऊपर केस करेगा या उसके कुछ राइट्स, हमारे पास राइट्स का ज्यादा ख्याल ही नहीं किया जाता है। बट इन द यूरोपियन कंट्रीज, इन द गल्फ कंट्रीज, दे दे डेफिनेटली केयर फॉर देयर राइट्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का केयर, पेशेंट का हेल्थ केयर के बारे में उनकी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है दैट द पेशेंट्स राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड। वहां पे अगर इन्वेस्टिगेशन भी करानी होती है तो हमारे, मैं यहाँ जब मैं दुबई गया था तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम आ गई कि हम उनके प्रिस्क्रिप्शंस पे इन्वेस्टिगेशन मानते ही नहीं हो, बिकॉज दे आर हैविंग देयर स्ट्रिंजेंट लॉज। तो वहां वो लॉज के अंदर रहते हुए हम अपने मेडिसिन को, अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रोपेगेट करेंगे, दैट विल बी फार बेटर एज कंपेयर टू जो हम अपने लेकिन इसमें भी ये चीजें हैं कि बहुत सारी जो उनके अपने प्रोटोकॉल्स है, वो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो अपना बेसिक फंडामेंटल्स है उसको वायलेट कर रहे हैं। ये मैं बार बार कहता हूं और कई बार ये फोरम्स में भी आ गया कि जो हमारी बेसिक फंडामेंटल्स हैं हम उसे हट रहे हैं कहीं कहीं। इसीलिए हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन के प्रोटोकॉल्स हम ले लेते हैं तो उसमें हमें फिर सक्सेस नहीं मिलती है। ऑल्दो इन लेबोरेटरीज वी प्रूव दैट दिस प्लांट इज हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, बट व्हेन वी कम टू द क्लिनिकल ट्रायल्स इट टोटली फेल्स। मसला यही है क्योंकि एनिमल ट्रायल्स में हमें बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो कहीं नहीं मिलती है। यू डोंट हैव द प्रकृति जो आयुर्वेदा में है, या हमारे पास जो मिजाज है टेम्परामेंट में। सोफी साहब जो टेम्परामेंट पे पूरा होल्ड रखते हैं, ये भी मानेंगे कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में मेन चीज जो लैक हो रहा है वो बेसिक फंडामेंटल्स जो हमारे आयुष के हैं वो लैक हो रहे हैं। तो वहां पे आपको रिजल्ट्स कुछ भी मिलेंगे। वंस यू आर गोइंग फॉर फाइटोसिटिकल, तो फाइटोसिटिकल फिर मॉडर्न में ही आ गया। मॉडर्न में भी फाइटोसिटिकल के बेस पे ही मॉलिक्यूल्स बना दिए गए। तो फिर हमारा जो है, हमारा रोल ही वहां खत्म हो रहा है। ये जो साइंटिफिक कम्युनिटीज हमारे पास आ रही है, इस कोलैबोरेशन करेंगे आयुष के साथ, आयुष को साथ लेके चलेंगे, दे जस्ट आर आफ्टर द फाइटोसिटिकल्स। वो जो फाइटोसिटिकल्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पीछे पड़े हैं, वहां मॉलिक्यूल्स डेवलप करके वो अपना चलते हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है वो कोई अडॉप्ट नहीं करने के लिए तैयार है। चाहे वो साइंटिफिक कम्युनिटी फ्रॉम द सीएसआईआर हो, साइंटिफिक कम्युनिटी फ्रॉम आईएसएमआर आईसीएमआर हो, चाहे जो साइंटिफिक कम्युनिटी फ्रॉम अदर वेल रिप्यूटेड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स को कहीं पे भी ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हमारा बेसिक फंडामेंटल जब तक हमारा दुरुस्त नहीं होगा तब तक हम नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल कामयाब नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए जो पुराने वेद थे, जो पुराने हकीम थे, वो बेसिक फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के ही दवा तजवीज करते थे, दवा प्रिस्क्राइब करते थे। मॉडर्न गैजेट्स का तो हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, आप आराम से इस्तेमाल कर लीजिए, बट अनटिल वी स्टिक टू आवर बेसिक फंडामेंटल्स वी विल नॉट बी सक्सेसफुल डेफिनेटली। इसीलिए हमारे पास जो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल जो आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स हैं जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी चीजों का तो समाधान है, बहुत सारी डिजीज ट्रीट हो रही है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो रही है जहां हमारे पुराने भाव जो वेदास थे, जो वेद थे पुराने, जो हकीम थे पुराने, वो जिस तरह से ट्रीटमेंट करते थे उस लेवल तक हमें अभी तक नहीं। ऑल्दो हैविंग ए प्रोफेशनल डिग्रीज, हम वो लेवल तक नहीं आ रहे हैं। यही वजह है
इट इज बिकॉज वी आर डिवेटिंग फ्रॉम आवर फंडामेंटल्स। हम साइंटिफिक रिसर्च पे ज्यादा बिलीव करते हैं, और रिसर्च में जो वो रिसर्च जो लेबोरेटरी से आ रही है, उसमें लेबोरेटरी, पहले जो लेबोरेटरी होती थी वो ह्यूमन बॉडी होती थी, ह्यूमन बॉडी पे ही एक्सपेरिमेंटेशन होता था वहीं से। लेकिन बाद में चूंकि रूल्स चेंज हो गए, नहीं पहले एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तो वहां से एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में आने के बाद हमारे पूरे जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो टोटल डिमिनिश हो गए। वहां पे फंडामेंटल्स का कोई ख्याल ही नहीं किया जाता है, चाहे वो इन विवो हो, चाहे वो इन विट्रो हो, कोई भी स्टडी हो, प्रीक्लिनिकल स्टडीज, वो सारे जो है, क्योंकि हमारे पास हमारे सोफे साहब जो है वो फार्माकोलॉजी से है, हमारे पास दवाई के बारे में यही लिखा गया है कि वो जिस्म के अंदर जो कैफियत पैदा करती है वही उसका असर है। तो वो कैफियत कौन बताएगा? वो तो ह्यूमन ही बताएगा ना, वो एनिमल थोड़ी बताएगा कि मेरे के अंदर क्या कैफियत पैदा हुई। वो या तो उजू का जूस बनता जाता है, या उसके आप उसमें काम कर लेता है, वो भी वहीं पे पता चलेगा। सो दैट इज व्हाई वंस वी डिविएट फ्रॉम आवर फंडामेंटल्स, तो ग्लोबल लेवल पे अगर हमें जाना है, देन वी हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसीज ऑफ दैट कंट्री, जिस कंट्री में जाना है, वहां के लोगों से, वहां के साइंटिफिक कम्युनिटी से बात करके हमें अपने फंडामेंटल्स उनको समझाने हैं, वो समझ जाएंगे। बट वी मस्ट हैव सम वैलिड वैलिड डाटा फॉर दैट। अगर हम प्रकृति कर रहे हैं, अभी प्रकृति का वो एक अभियान चला है, जिसमें हमारे पास भी आए थे यहाँ सेंटर में आयुर्वेद वाले, कि हम वो प्रकृति का वो ऐप के थ्रू जो है सारे लोगों की प्रकृति हम डिटेक्ट करेंगे। और हमारे पास मिजाज का भी बन रहा है अभी, उसमें शायद सोफी साहब भी हैं, वो जो कमेटी बनी है उसमें हमारे वो हैदराबाद सेंट्री उसमें कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो वो जो मिजाज का जो हमारा प्रॉपर क्वेश्चनर है, वो जब तैयार हो जाएगा, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू कोलैबोरेट विद द लेटेस्ट जो कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजीज हैं, जो मशीन लर्निंग है, उसके साथ कोलैबोरेट करके वी आर आल्सो गोइंग टू डेवलप एन ऐप, तो जिससे हमें बिल्कुल ये पता चले कि आदमी का मिजाज क्या है, तो मिजाज के मुताबिक उसकी डिजीज क्या होने, वी कैन प्रेडिक्ट द डिजीज, क्योंकि हमारे पास एक लिखा हुआ है कि कौन से मिजाज में कौन सी डिजीज ज्यादा रहती हैं। तो उसी के मुताबिक फिर हम मिजाज के मुताबिक ही ड्रग्स भी दे सकते हैं, हम डाइट भी दे सकते हैं, हम उसको लाइफस्टाइल भी चेंज करा सकते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज टेम्परामेंट। तो जब तक हमारे बेसिक फंडामेंटल्स दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। दैट इज व्हाई वी आर स्ट्रेसिंग नाउ डेज ऑन फंडामेंटल रिसर्च। और यहाँ हैदराबाद में भी हमने वो पहले से ही चल रहा था, फंडामेंटल रिसर्च का एक सेंटर चल रहा था यहाँ पे, वो थोड़ा सा हैफजर्ड था। नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रीमलाइन दैट। तो वही फंडामेंटल्स लेके हम ग्लोबली जाएंगे, उनको समझाएंगे हमारे फंडामेंटल्स क्या हैं, कौन से बेसिक्स पे हम काम कर रहे हैं। तो उसमें हमें वैलिड डाटा चाहिए, जो डाटा हम उनको दिखा के हम उनका पूरा वो मतलब वी कैन गेन देयर कॉन्फिडेंस दैट नो दिस इज द रियल आयुष, दिस इज द रियल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तब जाके हम उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में ही जाना पड़ेगा। वी कांट डू एनीथिंग इंडिविजुअली ग्लोबली। So I think without preparation, giving so much of this is very much वो थैंक यू tedious वेरी for मच me। श्रीमती जी, थैंक यू, रियली थैंक यू। तो वी आर ये कुछ ग्रेटफुल चीजें टू। हैं, वही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये सारा का जो आपके 2000, पहले ये कॉन्ग्रेचुलेशन कि 2000वां है ये, वो 1000वें में भी मैं शामिल था। when it was 1000, at that time I was with you, and I am always with you because you are working sincerely towards the Ayush system। तो जो सिंसियर होता है वो हमेशा कामयाबी होता है। 2000 के लिए आपको बहुत ही मुबारकबाद दे रहा हूं मैं। तो ये सारे 2000 का जो आपने कम से कम ये तो बना लिया होगा, एक वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होगा उसका, वो बना के पूरा कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारा यूट्यूब का चैनल है, जिस दिन आदमी मिल जाएगा उसको बैठ के ये अमर गाथा लिख जाएगी। अकेला डिजाइनिंग, स्ट्रीमिंग, लाइव करना। नहीं 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 नहीं, थोड़े से मेजर पॉइंट्स उसमें से उठा के, वो पॉइंट्स एक लिख के एक हम पूरा वो एक बना लेंगे कि बात से मतलब अग्निहोत्री ये सर ने शुरू किया है। यहाँ वैसे से अग्निहोत्री सर के पास वो कंपेंडियम पूरा मौजूद है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सबको लिखते हैं, उनके 6 रजिस्टर भर चुके हैं। बस 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 उसी का हमें शॉर्ट फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन करना है। वो डॉक्यूमेंटेशन जो हम मिनिस्ट्री को दे सकते हैं, जो हम हायर बहुत अथॉरिटीज अच्छा। को दे सकते हैं कि नहीं, ये उसके लिए हम प्रॉब्लम। पर्पजली पर्पजली वेबिनार भी कर सकते हैं और वो भी भेज सकते हैं, दोनों ही कर सकते
वो मिनिस्ट्री को जब जाएगा उनको ये बताएंगे कि देखिए ग्लोबली क्या क्या प्रॉब्लम्स है जी और उनका जी समाधान क्या है। जी तो मिनिस्ट्री डेफिनेटली अडॉप्ट करेगी। मिनिस्ट्री कहाँ से, मतलब ये एक बार सेक्रेटरी सर से हमारी मीटिंग हो गई तो उन्होंने यही कहा सरकार कौन है, सरकार हम है, आप सरकार हैं, मैं सरकार हूँ, इवन जो पियान काम करता है वो भी सरकार ही है। जी जी जी, तो ये जो बहुत बहुत गवर्नमेंट को, जब आभार। गवर्नमेंट ऑलवेज रिलायज ऑन द पीपल, तो पब्लिक से जो आएगी आवाज वही तो हमारे पास एक ये है उर्दू में वो एक स्लोगन है, वो क्या, आवाज खलक जो है वो नकारे खुदा माना जाता है। तो जो लोगों की आवाज होती है फिर ईश्वर भी उसी की तरफ चलता है, भाई ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों की यही आवाज है तो इसी की तरफ चलो। तो ये चीजें जो है, ये अगर आप अपना थोड़ा सा छोटा सा एक बना लेंगे ब्रीफ कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या क्या इनका समाधान है, वो हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सके, तो ये एक आपकी तरफ से योगदान होगा ताकि गवर्नमेंट वो पॉलिसी अडॉप्ट करके वो आगे चलेंगे। और आई थिंक गवर्नमेंट विल डेफिनेटली लिसन टू अस, बिकॉज 2000 वेबिनार करना कोई जोक नहीं है। हम तो साल में दो दो वेबिनार नहीं कर पाते, तो जी, आपका शुक्रिया 2000 शुक्रिया। वेबिनार करना, इट इज नॉट अ जोक। तो ये 2000 वेबिनार का जो जिस्ट निकलेगा, 2000 पे एक जिस्ट निकलेगा, 2000 पे एक जिस्ट निकलेगा, क्या आया क्या नहीं आया, क्या क्या हमारे पास मतलब लोगों ने कहा, लोगों ने क्या इच्छा जाहिर की है, वो कुछ चीजें होंगी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है, कुछ चीजें होती है जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती है नहीं अडॉप्ट करती है, लेट दैट बी। गवर्नमेंट थोड़ी हमारे पे चलेगी, बट जी वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी ग्रेट मच। ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं अब योगा सनातन महाकुट जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। गुलामुद्दीन सोफी जी, प्लीज, मैं आपका भी सनातन जी के पश्चात आपको भी सादर आमंत्रित करूंगा। और आप दोनों से मेरी एक प्रार्थना है। हर मैंने कहा आयुष इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो आप एक एक स्पीकर हमको कहीं से भी, पीएचडी स्कॉलर हो, एक्सपर्ट हो, सब टॉपिक के एक्सपर्ट हो, क्लिनिशियन हो, वो मेरे को हर वेबिनार, क्लिनिकल वेबिनार के लिए प्लीज दीजिए। हम यूनानी सीखना चाहते हैं, ये हमारी भावना है कि हम यूनानी सीखना चाहते हैं। दुनिया सीखेगी बाद में, हम जो सामने हैं वो तो सीखना ही चाहेंगे, हम ये चाहते। एंड आयुष इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, यू फॉर यूनानी एंड यू फॉर यू बोथ। थैंक यू सनातन जी, वेलकम। वेलकम Namaskar सनातन जी। everyone. Yes, I congratulate you and your team for completing 2000 webinars, and I also feel happy to be a part of this. Today we are talking about the globalization of our system. India is always in the top place for its own contribution like Ayurveda, yoga, and Sanskrit. So always people come to India to learn about these three systems. What is the miracle behind yoga, and what is the scientific pronunciation of Sanskrit, and what is the miracle of Ayurveda. Particularly during last 10 years, when we planned to celebrate International Day of Yoga, it was the decision of several countries, more than 183 countries, agreed to celebrate 21st June as International Day of Yoga. So like that, recently also from this year onwards, 21st December, we have started the World Meditation Day. Yoga and meditation both are not different. Meditation is a part of yoga, but thing is to create awareness. Many people do not have time to practice asanas, pranayamas, kriyas, and different advanced techniques. But everybody can do meditation by sitting in the office, by sitting at home, even while they're waiting for somebody. Here, why it need to be globalized? Because when there is a demand, there is a supply.
So people are asking for the benefit of yoga because there is no use of chemicals, no use of side effects. But here in asana, pranayam, and meditation, here His connection is not there. is my voice audible? Yes. So think about what we have to have three concepts. One is what is the science behind this and how it helps to the all people, not only for the people who are suffering from any disease. Yoga has that capacity for the prevention, for the treatment, and for the management. So like that, yoga is now implemented in different institutes as a part of education, from school to college, college to university level, as a part of academic, and also उनका डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन में डिस्टरबेंस है. modern आपका sense. डिस्कनेक्शन हो रहा है बार बार सनातन जी. Yes, because of the last ओके webinar. कंक्लूड कर लीजिए. So next thing is for the research. When you do research on any evidence, see value at the global level. But there are many ethical committees, and when those who take patents and other license. So in yoga also there is a branding like Patanjali Yoga, Bihar School of Yoga, S Vyasa Yoga, other schools of yoga. So they promote at their own level in other countries. But people think all yoga is same. There is no doubt. But as per the Guru Param, विनोत्री सर आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, उनकी नहीं आ रही है. different गई. कोई बात gurus नहीं, they काइंडली आ कंक्लूड, गई, आ गई, क्योंकि आ गई, आपका आ गई. बार बार कट हो जा रहा है. काइंडली कंक्लूड yes. प्लीज. So yoga is in identification in the global world. There is no doubt, and we should teach people what is the essence of yoga. Then it will be. Thank you. थैंक यू Namaste. सनातन जी, थैंक यू. मैं श्री गुलामुद्दीन सोफी जी को, डॉक्टर गुलामुद्दीन सोफी जी को, आप सोचिए और एआई कितनी एक एक्टिव हो चुकी है. अभी हमारे यहाँ वेटिंग रूम में read.ai मीटिंग नोट्स एडमिट होना चाह रहा है. अपने आप देखिए, ये एआई का खेला है. ये अब ये एडमिट मैं मत. ये मैं कर रहा हूँ ताकि मीटिंग के नोट्स रीड हो जाए. इससे मीटिंग के नोट्स मेरे पास आ जाते हैं और कुछ नहीं. कैसे 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 मेरे को भी बताइए ये फिर. मैं एआई ऐप जो है, आई भी है, AI भी है. मैं ऐप का लिंक आपको भेज देता हूँ. वाह. ये वो ऐप को इसमें ऐड करते हैं, वो भी एज पार्टिसिपेंट आ जाता है और वो सारा कुछ रीड करके इवन रिकॉर्ड भी कर लेता है और वो सारा जो आपका जिस्ट बना लेता है जो भी मीटिंग का ये हो. हम बेकारी मेहनत कर रहे हैं. अरे क्या बात है, क्या अरे, बात है, क्या बात है. मैं हम वही लुट गए, घबरा गया. मैंने हम लुट अभी गए. इंटरनेट में देखा उसको कि ये क्या है, तब मालूम पड़ा कि वो तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर रीड असिस्टेंट. गजब, जी जी गजब. जी जी. अरे गजब गजब अरे है. रहने दो भाई, रहने दो. इसको इसको पार्टिसिपेंट बनाना पड़ेगा रोज, नहीं? जी हमारी जी दिहाड़ी वही बेकार वही हो गई. वो हिट द स्नैक
trying to join the meeting. आपने शायद इसको नहीं माना, तो ये बेचारा पड़ा हुआ है वहीं पे कि बाहर मुझे पड़ा हुआ अंदर ही मैं मिलना है एडमिट कर रहा हूँ उसको। ऐसे कैसे मान लेते हैं? हम घबरा गए कि कोई हैकर तो नहीं आ गया। नहीं उसने अपना वही वही उसने वही आपको लगा होगा, मुझे तो पहले डिक्लेयर करना चाहिए था कि ऐसा है। उसने अपना देखिए अब इंट्रोडक्शन आ नहीं गया। दिया, बिना इंट्रोडक्शन के नहीं एडमिट ये करते बोल हैं। रहा है रीड एआई मीटिंग नोट्स इज मैं रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड दिस मीटिंग। Taking notes to the meeting. Read words चलिए all. लास्ट में स्टार्टिंग देखते लाइव हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा और ये नोट सारा बना लेगा। जो और एक हम नोट्स देर है एक दुरुस्त है। नोट्स लिखते हैं तो ये एडमिटिंग नोट्स वगैरह वो सारा कुछ कर लेता है। चलिए सोफी जी का देर देखते है हैं दुरुस्त है। और आपने इसको एंट्री कैसे दी? तुम जी आगे नहीं हो नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट किया इसके ज्वाइन करने का। इसमें एक आता है कि इसमें एप्स जोड़ने के लिए, एप्स में ही आप एआई ऐप कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं डिटेल में जाता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अप्रूव कर रहा हूँ सोफी जी का लेक्चर, ये रिकॉर्ड मैं कर लो। देख लेता हूँ, आना चाहिए बस, क्योंकि ये जूम वाह। जूम जूम में मैं तो अब होता है, ये गूगल मीट में तो इजीली होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये आपका पेड वर्जन है ना। तो ये तब तक मेरा नहीं मानेगा जब तक कि आपका नहीं, ये आपको कॉन्फ्रेंस में नहीं लेगा। ठीक ये है। चीज, ये आ थैंक यू सर। गए जी, आएंगे। मेरे ये आपका आ लास्ट रहा है, आप वक्ता, थैंक यू कर रहे हैं तो ये मेरे लास्ट वक्ता शैकत कुमार बसु जी को सादर आमंत्रित करता हूं, और फिर इसका पूरा का पूरा मीटिंग का एक्सपर्टीज हम सोफी जी से लेंगे। आदरणीय शैकत कुमार बसु जी, थैंक यू। आज थैंक यू तो शर्मा दर्शन जी। दे दो। आज तो 2000 का सेलिब्रेशन है गुरु। मेरा खांसी बुखार, ओ मैं नहीं नहीं, थोड़ा विश यू। जुकाम में डाउन हो गया हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि मोटी मोटी बात ये तो, लाइक यू हैव डन अ स्प्लेंडिड। पहले तो मेरा हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्ट्रेचिंग दिस टू 2000 वेबिनार, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और सभी सारे दिनों से इतने सारे ब्यूटीफुल सजेशंस इतने अच्छे सुने कि लाइक कहने के लिए और कोई कुछ रहा नहीं। लाइक आई वाज थिंकिंग व्हाट टू से। I would rather like to conclude by saying that we all got very good suggestion, but like for the next 2000 webinars that we are targeting, we need this zeal, we need this push to carry it forward, which is not easy. But as Professor Sharma is the driving engine, I sincerely believe he will be able to push through this. And with supportive members such as Agnihotri ji, Sharma ji, and all other members who have been pushing through this, I think this is a monumental achievement. Having every day continuing webinar is a great sacrifice. Like, you know, it is sacrifice of your sleep, sacrifice of your um, association with your family members, sacrificing every time, every night, stretching up to 11:30, and again getting up on the morning, connecting with people, requesting them, selecting topic. मुझे लगता है कि how, like सारा दिन आप इसी में पड़े रहते हैं. Like how do you do this? I do not know. मैं तीन But तीन नौकरी करता हूँ, एक प्रोफेसरी की, एक हमारी सीआरओ मेड फार्मा सीआरओ की, और ये तीसरी नौकरी आयुष समृद्धि। अब कब सोते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, I do not know. 12 बजे से 4 बजे तक सोता हूँ बस। रात के 12 से 4 बजे तक ये 4 घंटा सो लिए, उसके बाद सारा दिन आप इसी के ऊपर पड़े रहते हैं. लाइक इट इज अमेजिंग अमेजिंग। हाउ, एंड उसके साथ अग्निहोत्री जी को भी कहना पड़ेगा, हर इवनिंग पूरा टाइम ऐसे साथ देना, even after retired life, is not an easy thing to do. Hats off to him that he has continued this support for such a long time. और उसके उससे भी बड़ा है उसके जो स्माइल है, इतना प्योर, इतना सपोर्टिव और इतना वार्म है, जो अगर किसी दिन पे मैं टायर्ड भी हूँ, वेरी एग्जॉस्टेड हूँ, लाइक कहीं जगह से लौट के आ रहा हूँ, शर्मा जी की इंस्पिरेशन और अग्निहोत्री जी के स्माइल मेरे लिए आयुर्वेदिक मेडिकेशन है. It pushes me through the day. So I am very, very grateful to you that every night, every day that you have been continuing this and pushing forward is a monumental achievement, not an easy possible thing. I remember a few years back when I met Sharma ji, he mentioned about like we are celebrating one Ayurveda day. I am doing this every day. I didn't realize what he was talking about at this time, at that particular point of time, because I just got to know him. But then pushing this forward for such a long time takes huge effort. See, every NGO, every other association struggles after a time.
it is not easy to drive it for a long time, to have people coming and supporting you, to have this energy and bringing people every night, speakers, connecting with them throughout the day, making 25 calls, abroad and within the country, putting their list, putting their posters and putting them forward, and then conducting, organizing it. Both you and Agnihotriji and Sharmaji and other people who have joined this effort is monumental. Hats off to you. I do not know, if I was given this responsibility, how much I would have been able to do and continue this so far. So once again, heartiest congratulations on this auspicious day. Just for this holistic part, like what I look forward towards as Ayurveda is, many people have already highlighted, this is not new, but I think many has highlighted about that, this, which I greatly appreciated, it is that the globalization of Ayurveda is associated with integrated integration of some aspects of modern medication with Ayurveda. I think this is very important, particularly not on the treatment part, but particularly on the diagnosis part. But so, with reference to learning how to study X-ray or MRI images, how to study and evaluate various blood parameters and other bodily parameters, what they signifies, at least broadly. And then I think you are empowered to make your diagnosis in Ayurveda even much, much better, just by listening to the case history, or just by listening to the patient's problems and challenges is one important thing, but these being corroborated and further substantiated by modern diagnostics tools that is available, I think it enriches the quality of the treatment. So whether some Ayurveda Acharya like it or not, I think it is the call of the day. So that, in this day, you cannot move away from AI, you cannot move away from information technology, you cannot move away from the mobile technology. Same is this, the modern biochemical tests for, if you are giving a diagnosis when you are aware what is the cholesterol level, what is the triglyceride level, what is the blood sugar level of that particular individual that you are treating, then you are 100% sure the diagnosis that you are providing is going in the right direction. So not by looking from him externally, even after 6 months, 1 year, 2 years, when this patient is showing recovery and is doing better, feeling better, he's saying, corroborating that with medical test, which suggests that his blood sugar has gone lower down, his triglycerides level has gone down, or the kidney stones has improved, can only be diagnosed through the modern diagnostic technology that we are having. Not adopting these parameters into Ayurveda, I think, is primitiveness. Whether some people will like it or not, I do not care. But I think for Ayurveda to survive, for Ayurveda to become a global part, global treatment, some integration of the modern medical practices should be integrated with Ayurveda, particularly with respect to the biochemical and imaging diagnostic part. It only enriches the treatment quality. Number one. Number two is a habit of documentation. What kind of treatment you are providing, what kind of prescriptions you are providing, what doses you have provided, how the patient has improved, not by making big claims, but taking photographs at regular intervals, having diagnostic tests that suggest that the parameters have improved over the time. Even for companies or even for groups of Ayurveda, Ayush himself, I am very much aware that the Ayush ministry is providing significant amount of money to many Ayurvedic practitioners, particularly in the hospitals, government and private, where they are going for long-term evaluation of patients, like, life history cases, as we do in allopathy. These are important. Many Ayurveda Acharyas do not like it. Whether they like it or not, it does not go with the modern science. If Ayurveda has to survive, if it has to become a global phenomena, if it has to reach the overshores and stuff, you have to show documentation. You have to show record. You have to provide proof. Just by coming on videos and saying that this is my patient, and the patient is saying, I have recovered, I am doing this, he is great, that is great, can be a hocus mumbo jumbo science. This is not Ayurveda. It has to be documented. It has to be long-term studies, needs to be documented properly as it is being done in other health sciences and stuff. Without this, its acceptability to the world, even its acceptability to the broader mass of the Indian population, will always be criticized. So I think this is time that Ayurveda has seen a great boom.
So some part of the technology, some part of these documentation is very important. Third, I suggest is putting extensive, funding, catering to, requesting the government to look into more Ayurveda texts that are being underexplored, translating them, making it available to researchers, looking into the medicinal plants and treatments that has been provided there, practicing them, trying to see, documenting them, and including more and more newer treatments, underexplored treatments, treatment that has not been given much value to be integrated into Ayurveda. And as soon as these research materials come up, they will become a part of the curriculum over the time. We need to come up with the research and stuff. Same with the, double blind test, use of placebo and stuff, and Ayurvedic medication application simultaneously, as is done in modern medicine, is necessary for Ayurveda to document in the similar way. This is something important that is lacking in some areas. Some people will say that there is lack of funding, etc. But I am very much aware that Ayush is spending money on this. Just recently, a private institute in West Bengal, a college from East Midnapur district, had received 19 lakhs for long-term evaluation study on kidney stones and related thing, undergoing Ayurveda treatment. Everything will be documented and stuff. Ayurvedic treatment will follow in the Ayurvedic colleges. Patients will be identified. They will be compared against normal group which do not get an Ayurvedic treatment. And every time that we are suggesting that the improvements is happening, their records should be modern records, are being asked that they will be taken into consideration. So these are very important. This is not taking away Ayurveda. Like, this is a false feeling among some Ayurvedic practitioners, like integrating modern science into Ayurveda dilutes Ayurveda. I do not believe this bullshit. It only strengthens Ayurveda. It only strengthens Ayurveda in the realm of the science and technological development. In 21st century, if I say that I'm not going to record, I'm going to record my information of the patient only on record books, and I'm not going to digitize them so that I can produce graphs, I can see patterns, I can do statistics on that. It's just childish. Like, this needs to change, this focus needs to change to make globalization of Ayurveda, making it internationally more acceptable, and even within the country more acceptable, by having this scientific strengthening. This is the only lacking part that I think in the wholehearted acceptance of Ayurveda. There will be various people even outside Ayurveda communities and stuff that do not want to see Ayurveda flourish by saying that these are not useful and stuff. I don't think this is very true or correct. These practices needs to be integrated into Ayurveda, and the study and evaluation of Ayurveda and patient improving, whether it is cancer, whether it is HIV infection, whether it is any kind of heart diseases, brain diseases, psychological challenges, kidney stones or related problem, triglycerides, diabetes, everything. Documentation is like, today Europeans have thrived around the world. What is the reason? Is because of their documentation from very ancient time, whether they are doing chemistry, whether they are doing physics, or whether they are doing biology or medical science or agriculture. Their success has been that they have documented everything in writing, with pictures, with images. That enriches the quality. Look into our scriptures from the ancient times. So many pictures and stuff are provided there too. So documentation is important. Think about the Shruti system that we had in India. For generations, scholars have transmitted their knowledge by, expressing without writing, by memorizing them and transferring this to the next group. But because as time changes, as this knowledge was lost, this is a huge loss for India. We should have documented everything. But again, this was ancient time and this is modern times. We have the availability of deep learning, machine learning, AI technology, blockchain technology, information technology available at our fingertips. If all other disciplines are making use of them, I think Ayurveda can also make use of them and work towards documenting the treatment of plants, the plant parts, how they are being processed, how the cuts are prepared. Everything needs to be translated into other regional Indian languages, particularly English and Hindi, so that it is accessible to a large number of population. Researchers, even from related disciplines, should be able to investigate and look into this. And this way, the popularity as well as the acceptability of Ayurveda will increase. So I will always advocate that Ayurveda, as the core science of medical holistic practices, one of the best in the world,
needs to get even better by integrating modern science into the conventional studies of Ayurveda. There should be the conventional study of Ayurveda, but it needs to be integrated with some of the modern aspects of medical sciences that will only enrich the subject, make it more accessible and acceptable to a wider population. And particularly from a global perspective, it will help Ayurveda to be more globally acceptable. Publishing, I heard that so many of the speakers talked about modern research publications. It is important to publish Ayurvedic results in English standard journals so that wider population gets to know this. If we are publishing in Indian languages, it only relates to cater to a very small group. But if you are publishing in standard international national journal in English, it has a wider access, a wider reach. People can cite your work by looking into your part. Does not necessarily mean that an Ayurvedic practitioner is citing your work. It could be cited in medicinal chemistry. It could be cited in agricultural studies where parts of medicinal plants have been used to highlight the importance. They could cite your paper. Even the treatment process and stuff, how they have been done, where success has been achieved, needs to be documented. By hiding this, like this is my own invention, no one needs to know and stuff, I think this is hocus pocus science. If it is not repeatable, if I apply the same dosages to 20 patients and I do not see a significant number of them are improving compared to people who have not been given the treatment, only randomly 1 or 2 people are getting better, and out of 20, 18 are not responding or they are remaining the same, then it is not because of that particular medical treatment that you are talking about. So this needs to be documented. We do not want false positive. We do not want false negatives. We want positive positives. We want positive negatives to make Ayurveda a stronger foundational science. I sincerely believe if the ancient acharyas of Ayurveda were present today, they would have integrated this modern technology that is available and enriched science, enriched the scientific quality of Ayurveda, research-wise and application-wise, to make it more accessible and available to a broader community. With this, I conclude my presentation. I am sure that many Ayurvedic practitioners will not like my view, but I give a damn to that. I may sound rude, but this is the reality. If you are not accepting modern science integration into Ayurveda, you are only pulling Ayurveda down. You are not pushing it forward. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Sakarji. Thank you very much. Agnihotri, sir. Thank you, Sakarji. And your presentation made your throat clear, so that by the end it was very audible, very good sound. Thank you. Great. I am feeling better now. I am feeling better now. As you told that our smile gives you a Ayurvedic push. That happened practically. It is Ayurvedic boosting. It is your smile is my immunity booster. Simply. So it practically proved. It practically proved within that program. Thank you very much. We need to document this. We need to document this with time and stuff. Yeah. Thank you so much for having me. And I'm honored. I'm so proud that we have reached 2000. I want to reach another 2000 milestone. This is only with you people's contribution. Thank you very much, शेखर जी. मैं अब डॉक्टर अवतार सर से कंक्लूडिंग रिमार्क्स की आशा करता हूं. उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स अग्निहोत्री सर. आदरणीय डॉक्टर अवतार सर, प्लीज अनम्यूट. सर सोफी साहब रह गए. सोफी साहब को आपने शायद कहा था. निकल गए, वो निकल गए लेफ्ट. अच्छा. Hello, sir. Thank you very much. You giving me time again. I have the very good idea to how can we, like Yunus sir said so many things, other people say very good thing. We have 150 crore population. I seen from UK, people going for treatment to the other country, Poland, Holland, and Turkey for so many treatment. If we, in these countries, only we have nearly 15, like Dr. Shekhar said, we have only 15, 16 countries of speaking English. Other whole world from 220 countries, they don't speak English. We have the biggest population after China, and our people are too much suffering from the diseases.
Like Dr. Yunus said, it's a very good thing. They done very good things in that. They're doing very good. I'm thinking, just think about if we start curing and giving help to in our country only, people start coming from outside to India for the treatment, for the health treatment. They already, so many people going to so many doctors, they're doing very good treatment. Doing this, other countries have a lot of rules, a lot of regulation. We can't even use here in UK so many things, which one we can use in India. We have to be careful all the time. यहां से अगर इंडिया को ही हम ठीक करना शुरू कर दें, इंडिया जो हमारे भारत के लोग हैं उन्हीं को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें. मैं कई दफा कहता हूं कि हमारे में बहुत कमियां हैं, वहां जो हम लोगों को अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं, उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, नीट गुड ट्रीटमेंट करना तो सीख जाएंगे, गुड डायग्नोज करना पहले सिखाया जाए, अच्छी तरह मेडिसिन जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, अच्छी मेडिसिन बने, अच्छी मेडिसिन ग्रो करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो हर्ब्स आजकल मिल रही हैं हमें, वो स्टैंडर्ड की नहीं है जो आयुर्वेद में यूज होती थी. मैंने डॉक्टर जोशी और डॉक्टर भमरा ने रिकॉर्ड किया हुआ मेरा वीडियो. मैंने कहा अगर हम 50 हर्ब्स जो है अच्छी तरह ग्रो कर लें जैसे हमें चाहिए, तो हम 50 मेडिसिन से 90% लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हो. मैं कस्टम मेड मेडिसिन बनाने वाला हूं, पुराना आयुर्वेद को जो मैंने सीखा हुआ है, जिसमें सिद्ध आयुर्वेदा भी कहते हैं, जो यूनानी और आयुर्वेद दोनों का मिक्स था पंजाब में. मैं वहां के गुरुकुल से सीखा हुआ हूं, तो वहां उस समय के जो सर्टिफिकेट्स वहां से लिए. सो अगर हम वो करें तो हम इंडिया में जो लोग सफर कर रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी जब बाहर जाएगी तो हमें बाहर की कंट्री के प्रोटोकॉल यूज नहीं करने पड़ेंगे. वहां के लोग इंडिया ट्रीटमेंट करने के लिए आएंगे. आज इंडिया से बाहर इंग्लैंड में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा खत्म हो जाएगा. तो इंडिया को बहुत कुछ मिलेगा उससे. इंडिया की पॉपुलैरिटी अपने आप, हम अपने देश में ही अगर आयुर्वेद जो है उसको इस तरीके से देना शुरू कर दें कि लोग, इंडिया के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, वहीं से सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए. अच्छी मेडिसिन बननी चाहिए, अच्छी हर्ब्स हमें मिलनी चाहिए, और अच्छे जो डॉक्टर हैं उनको जो नहीं जानते अच्छी तरह से डायग्नोज करना, उनको डायग्नोज करना सिखा दिया जाए, तो उससे हम बहुत कुछ इंडिया में अचीव कर सकते हैं. Say to Dr. Yunus, thank you very much. I really very appreciate what you said today, and all the doctors, all the participants who came. Dr. Shekhar, they says very good things. तपन जी, एवरीथिंग. सो आपको फिर बहुत बहुत प्यार, और बहुत बहुत ही प्यार. आपने जो कर रहे हैं ये लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं है. इस वक्त कोई नहीं कर रहा और ना ही किसी से होगा. पंडित जी कहते हैं कि मेरे तो 3 ही काम है, तो मेरे को एक बात का डरने लगा कि मेरी तरह घर वालों ने भी निकाला हुआ तो नहीं है इनको. मैं निकला हुआ हूँ सर, मैं निकल. क्या बात है, आप तो मेरे बड़े भाई हैं फिर. जय हो, जय हो. तो बहुत बहुत प्यार. आप इसी तरह सभी को नया साल मुबारक हो करते हैं. सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ही प्यार. एक तारीख को आपकी कविताएं सुनने की प्रार्थना है. स्वागत है, नव वर्ष पे हम एक कवि सम्मेलन रख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उसका उद्घाटन करें. एक मेरा शेर है, कदी किधरे ए जितेगी, कदी किधरे ए हारेगी, मेरी किस्मत मेरे दरिया के मैनू खुद पुकारेगी. थैंक यू वेरी मच. जय हो, जय हो. अग्निहोत्री सर, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. आज बहुत ही अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ में ये जो आज वेबिनार का इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने का दौर चला, इसमें इतना अच्छा लगा कि हम शब्दशः किस किस की क्या कहें, लेकिन सभी ने आज की इस वेबिनार 2002 एपिसोड को बनाया. डॉक्टर सुहास कुमार शेट्टी told that now India is heading towards health in India, health by India. A smart word carries letter by letter meaning. Secondly, Dr. Shekhar Navolta told that COVID pandemic gave the chance to start sharing knowledge and now reached to 2000 episodes. Doing so, Professor Pawan Sharma ji is a fit person to be appointed as Ayurved chair.
This is the greatest compliment to Professor Pawan Sharma by Dr. Shekharji. He also told that Indians are fit for everyone and for every country for globalization of AYUSH. He extended his wishes for the continuation of endless webinars episodes to promote AYUSH, congratulated the whole team of IRES. Dr. Yunus Munshiji, after greeting for today's success, he talked about the center-sponsored schemes for promotion of AYUSH. Person's Prakriti, that is nature, assessment will be helpful for AYUSH globalization. Shri Sanatan Mahakund, he gave congratulations to team on great achievement, also talked about yogic miracle and scientific approach to Ayurveda. Dr. Shaikat Kumar Vasu, a great splendid effort to reach 2000 episodes and carry forward. What to say? A monumental achievement of pure smiles convert as Ayurvedic boosting for making him refresh. Ayurveda to be handled properly in terms of teaching, research, and treating for humanity. Integration of knowledge is the most needed. Concluding remarks, world is there for us to do with Ayurveda. We have to prepare ourselves for our country first. These are the words, important words told by our today's respected guest speakers with the fullest of emotions, knowledge, contribution, and attachment with this IRES platform. I by heart feel indebted and really gave all the my words to them for their time sparing, knowledge sparing, experience sparing, and making us cheerful by congratulating him on today's achievement. Thank you so much. And over to Professor Pawan Sharma. I'm mute. Professor Pawan Sharma ji is now mute, and I think this is what today's achievement is. Thank you very much, sir. Thank you very much. मैं ये चाहता हूं कि मैं तो केवल आप लोगों के उपकारों के सामने नमन करता हूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। सोचा नहीं था ये यात्रा शुरू करने के पहले। कई लोगों ने उपहास उड़ाया, कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कई लोगों ने रोकने के आदेश तक दिए कि रुक जाओ भैया। लेकिन ये यात्रा हर अवरोधों को पार करके, यूनुस जी, आप, अवतार सर, आप लोग हैं तो फिर हमें क्या चिंता है। मैं यूनुस लोगों का काम है कहना। यहाँ लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। ठीक बोले। हाँ बिल्कुल, आप जो कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। जय हो। ये बात याद रखना। हम जानते हैं लोग कितने पानी में हैं। ओके जी, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे शेर की तरह गरजते रहिए दोनों। जय हो। आप आयुर्वेद के शेर हैं। ओके थैंक यू। ये शेरों की जोड़ी है। ओके अब हमको सर, हम तो एक ही बात प्रार्थना करते हैं, आप इतने मैं सॉरी बुजुर्ग तो मेरे मुंह से कहा कोई बात नहीं, लोगों को पता है। नहीं, लोगों को पता है तो गलती पे गलती नहीं करना चाहिए। नहीं, लोगों को पता है। जब हम दोनों चलेंगे वो आपको बोलेंगे, आपका वो चाचा क्या पीछे रह गया, क्या बात है। तो आप लोग हमें 150 कंट्री हमारे साथ घूमेंगे आपकी लीडरशिप में। आप इस बात को याद रखना, हमें सौखा आसान तरीका क्या है, इसको इंडिया में इतना पॉपुलर कर दो कि लोगों के पास बाहर से आने शुरू कर दें लोग। हमारे इंडिया को कितनी इकोनॉमी मिलेगी, वो उसका चेहरा ऐसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। जब आपके पास टाइम हो, मेरे को 15-20 मिनट का टाइम देना, हम मीटिंग करेंगे। मैं कुछ चीजें बातें करना चाहता हूं, उन बातों से अगर वो कर दें तो हम इंडिया से, मैंने बहुत दफा कहा है, अगर हम प्रॉपर तरीके से, जैसे आयुर्वेद लिखा है, जैसे डॉक्टर यूनुस ने कहा, और भी बहुत सारे, आज मेरे को बहुत खुशी हो कि जो